Hi, everybody. I hope it's live. Yeah. So, hello, everyone. Welcome back to ExamFactor CUET, where we will be discussing the PYQs and some other practice questions as well. So, for giving a quick introduction to myself, I'm Yashshvika Tiwari, and currently I'm studying at Lady Shri Ram College and I'm pursuing political science honors. As you can see on the screen as well, I scored 100 percentile in history, political science, economics, and English in my attempt of CVT UG 2022. Moving forward, so these are some of the mock test series. This is about the mock test series of the exam factor. They are offering you multiple of the subjects: accountancy, business studies, economics, mathematics, physics, chemistry, biology, history, geography, political science, psychology, English, journal tests. So almost all these subjects are already covered. So you can go on their website and check it out for revision and for saving your time, you can also look at their crash courses. The subjects are also mentioned on the slide. Now, without much delay, I think I should start discussing some of the questions. So, we discussed some questions yesterday as well. I'll be moving forward with more, and we'll discuss more questions today. How many of you are live? Can I get a hi, hello, or something? Okay, so this is the first question for today. In which year was the NATO formed? 1949, 1961, 1945, or 1972? Very factual question again. Okay, so the correct answer is 1949. It was formed in 1949, and the full form of NATO is North Atlantic Treaty Organization. It was formed in April 1949 during the Cold War time. And the most important thing about NATO is its Article 5. And why I'm saying so is because it is the foundational article which actually, gives the main power to the NATO countries. So what does that Article 5 says? It says that attack on one will be considered as an attack on all. जो तो जिसका मतलब ये हुआ कि अगर नेटो का कोई भी मेंबर बनता है तो उसके पास ये एडवांटेज रहता है कि अगर उसके ऊपर कभी भी कोई भी कंट्री अटैक करती है तो सिर्फ वो कंट्री अकेले नहीं होगी फाइट बैक करने में बल्कि उसके साथ जितने नेटो के मेंबर्स हैं वो सब मिलकर फाइट बैक कर सकता है सो बेसिकली इट इज अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. So it was an easy question. For these sort of questions, you should use some chart or something and paste it in front of your study table maybe for these dates and the factual things. Now, the next question is the Biological Weapons Convention. It was held in. It's the next question. So there are four options: 1970, 1972, 1974, or 1976.
This is again a very factual question. As I said, you should have like a note of these dates, years, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में और प्रॉब्लम यही होती है कि इनको इस तरीके से याद करके रखना और बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उसके लिए यू शुड हैव अ नोट ऑफ दीज कहीं पर भी चाहे कोई चार्ट पेपर लेके स्टडी टेबल के सामने रखो या नोटबुक के जहाँ पर चैप्टर एंड हो रहा है उसके बाद तुम बना सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी इंपॉर्टेंट ईयर क्या थे क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आने ही होते हैं कुछ तो you should not lose marks here. So what is the correct answer? It's option B. It was in 1972. So to give an explanation, like इसमें explanation जैसा तो कुछ है नहीं क्योंकि इसमें directly question था. But to make it more interesting, I would like to ask, what are biological weapons? Like कोई मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है अभी कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल वेपन का जिससे हम लोग सब परेशान हुए थे कभी उसको मतलब ऐसा एलिगेशंस लगाकर बोला जाता है कि इट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन ऑफ सम कंट्री सो इफ समवन कैन गिव मी द नेम ऑफ दैट बायोलॉजिकल वेपन बिकॉज इन दिस एरा डायरेक्टली वॉर करना इज वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव आई वुड से क्योंकि आपकी मिलिट्रीज आती है उसके अलावा आपका खर्चा होता है बाकी बहुत ज्यादा तो जो आज की वॉर्स हैं उन्होंने एक अलग तरीके का फॉर्म ले लिया है तो अभी हम देखते हैं जैसे साइबर वॉर्स होते हैं या फिर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं या केमिकल वेपन्स होते हैं तो ये जो होती है ये कॉस्ट इफेक्टिव वॉर्स होती है एक तरह से एंड इनका मेन पॉइंट यही होता है कि आप कैसे किसी सामने वाली कंट्री को बिना वेपन्स जो बहुत ट्रेडिशनल मायने में जो वेपन्स होते हैं उनको बिना यूज किए आप कैसे किसी सामने वाली कंट्री को हरा सकते हैं तो एज आई वाज सेइंग बायोलॉजिकल वेपन कौन सा था वो तो दैट वाज कोविड-19 ऑफ कोर्स नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, so it's question 8. Which among the following statement is not related to the rise of Chinese economy? अब इतना स्टेटमेंट पढ़ते ही सबको याद आना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है और कहाँ पे इसके बारे में बात हुई थी. That is why I always say that read NCRTs for almost like 5 to 6 times. It's minimum. For a humanities student, NCRTs are their Bible. So, you should be well versed with them. Yeah, so option A is the Chinese leadership took major policy decisions in 1970. Option B, China followed the Soviet model in the field of industries and agriculture sectors. Option C, Deng Xiaoping announced the open door policy. And option D, trade barrier in China were eliminated only in special economic zones. The word only. And what else? What is the other extreme word? Always try to find extreme words if there are any in the options because they change your answers to some extent. So the extreme words माने कि जैसे only, all, always या rarely या ऐसे जो extreme words होते हैं जो कि किसी भी sentence का meaning change कर सकते हैं you should always look for them कि वो क्या है ऑप्शंस में और उनको किस तरीके से यूज किया गया है क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं सो या एनी आंसर्स
Okay, so the correct answer is option B. And why so? So when we look at option A, the Chinese leadership took major policy decisions in 1970. Yes, it is true. 1970s का ही वो फेज था जिस टाइम पर चाइनीज इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे और वो एक कन्वेंशनल कम्युनिस्ट इकोनॉमी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी टू अ मोर ओपन इकोनॉमी, टू अ मोर मार्केट इकोनॉमी. पूरा completely नहीं, but yes to some extent. And we have some examples also कि कैसे वो changes और कौन सी वो policy decisions थे जो कि उस टाइम पे लिए गए थे. उनमें से ही नीचे आपको बताया हुआ भी है, जैसे डेंग जियोपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी वो लेकर आए थे, जिससे जो अभी तक जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी जिसमें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. फर्स्ट इज योर क्लोज्ड इकोनॉमी एंड अदर इज योर ओपन इकोनॉमी. तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है थोड़ा. तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है बेसिकली इट ट्राइज टू सस्टेन ऑन इट्स ओन, राइट. इसका मतलब क्या है कि उसका किसी भी कंट्री से रिलेशन नहीं है, ट्रेड रिलेशन नहीं है. वो ना तो एक्सपोर्ट करती है ना ही इम्पोर्ट करती है. बट लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल. तो दूसरी तरफ जो एक ओपन इकोनॉमी होती है वो उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को साथ में रख के तब वर्क करती है कि ओपन का मतलब ये समझ आ रहा है ना कि ओपन है बॉर्डर्स एक तरह से, जो तो ट्रेड बैरियर्स नहीं है कुछ भी ऐसे कि इंपोर्ट हो सकता है एक्सपोर्ट हो सकता है. तो दैट इज ओपन इकोनॉमी. तो डेंग जियोपिंग आते हैं और उसके बाद वो चेंज करते हैं चाइना की पॉलिसी और वो इसको एक ओपन इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. तो उसी पॉलिसी का नाम ओपन डोर पॉलिसी रख दिया था उन्होंने. So C is correct. And as I was saying कि D option कहीं पे किसी को कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड ओनली यूज हुआ है. बट इफ यू रीड एनसीईआरटी वेरी केयरफुली तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रेड बैरियर्स थे चाइना में वो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ही हटाए गए थे. और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं जहाँ पर बेसिकली उसके लिए बनाए जाते हैं कि we can attract the investors in our country. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स से ही समझ आ रहा है कि आप कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी इन्वेस्टर को, या कुछ भी हो सकता है वो कि हो सकता है वहां पर ट्रेड बैरियर्स हो ही ना, या फिर वहां पर आपको जो ट्रेड लिमिटेशंस हैं वो कम हो. तो ऐसे करके कुछ भी एक लिक्रेटिव से रिटर्न्स होते हैं जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डाला जाता है टू इंक्रीज देयर ट्रेड्स. ओके. Now, next question. Question number 9. The Mandal Commission recommended that a 10% reservation in educational institutions and government for jobs for other backward classes. B. 20% reservations in educational institutions and government for jobs for other backward classes. C. 27% reservations in educational institutions and government for jobs for other backward classes. And 30% reservation in educational institutions and government for jobs for the OBCs. Any answers? Try to answer in the chat so that the session is interactive enough. It's an easy question क्योंकि बस इसमें परसेंट ही चेंज है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सारी ही ऑप्शंस में सेम है. तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द परसेंटेज, क्या परसेंटेज थी जो कि रिकमेंडेड थी मंडल कमीशन की तरफ से. And can someone also tell me मंडल कमीशन कब like फॉर्म हुआ था, what which year it was, and कौन सी पार्टी की सरकार थी उस वक्त देश में. अगर ये सारे स्टेप्स लाइक ये काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर्स थे जहाँ पर पूरी गवर्नमेंट का एक क्रोनोलॉजी वाइज समझाया हुआ था, तो
इफ यू कैन रिमेम्बर दैट क्रोनोलॉजी और उसके साथ के जुड़े इवेंट्स, तो मुझे लगता है कि वो काफी इजी हो जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर अलग अलग उसको करके पढ़ा और उसके बाद की गवर्नमेंट की जो क्रोनोलॉजी है वो अलग कर दी है आपने, और उसके बाद जो मेजर इवेंट्स है जैसे मंडल कमीशन का इवेंट था और उनको अलग कर दिया है, तो मुझे लगता है उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई टू मेमोराइज दिस कि क्या एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी है, कौन सी गवर्नमेंट के बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस का टाइम, कि सबसे पहले नेहरू थे, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, और अलॉन्ग विद कि उस टाइम पे मेजर चेंजेस क्या आ रहे थे। तो वी नो कि, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जब नेहरू थे तो इट वाज मोर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बट व्हेन लाल बहादुर शास्त्री केम सो इट वाज अ मोर सॉफ्ट लीडर, आई वुड से। देन उसके बाद दोबारा सरकार चेंज होती है, फिर इंदिरा गांधी का जब टाइम आता है तो वो कैसे बनती है कि इनिशियली उनको सोचा गया था कि शी इज अ डम डॉल काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद वो चेंज होते हैं। क्यों क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आप इस चीज को कनेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, जब तक आप उन लीडर्स को नहीं समझ सकते, जब तक आप उनकी आइडियोलॉजी को नहीं समझ सकते, तब तक मुझे लगता है कि उनसे रिलेटेड जितने इवेंट्स हैं उनको याद रख पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि यू जस्ट हैव टू गिव सीयूईटी एग्जाम, दैट इज व्हाई यू आर रीडिंग दैम। नो, इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग ईयर्स एज वेल, क्योंकि उस वक्त आपको कोई नहीं बताएगा ये कि उस वक्त किसकी सरकार थी किसकी नहीं। वो डायरेक्ट आएंगे, आपको आइडियोलॉजी बताएंगे, आपको खुद समझना होगा कि उस वक्त क्या माहौल था देश में, और किसकी सरकार थी और क्या चल रहा था उस वक्त, उस टाइम पे कौन से इवेंट्स थे, कब मंडल पॉलिटिक्स का राइज हुआ था, या कब वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात होती थी देश में, उसके बाद से उससे रिलेटेड कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। तो आई थिंक ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, इज लाइक इसको याद कर लो क्रोनोलॉजी को, कौन से लीडर के बाद कौन आया था, एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि मेक अ चार्ट और समथिंग एंड डू दैट। ओके, सो द इतना डिस्कशन करने के बाद द करेक्ट आंसर इज सी, 27% रिजर्वेशन मिला था ओबीसीज को जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। मंडल कमीशन कब फॉर्म हुई थी? सो इट वाज सेटअप इट वाज सेटअप इन 1978, और उसके बाद 2 साल बाद ये जाकर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं 1980 में। और देयर इज वन पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द मंडल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा, ही इज कर्पूरी ठाकुर। सो यू शुड नो हिज नेम, because Karpuri Thakur, and now why I'm saying so, if someone can tell me what is that current affair event which is related to him, like it was most discussed some days back. No, not days, last month. Yeah, if you people read newspapers or something, I hope you do, because there will be some people who will be giving GT as well. So for that, current affairs are also important. Okay, so why I was saying that Kabir Thakur was in news was because he is gonna get Bharat Ratna very soon. Of course, posthumously, but yes, so he was nominated for the Bharat Ratna thing. So that is why he was in news, and he is the prominent personality who is related to the OBC reservations and the Mandal Commission. The Mandal Commission के लिए तो जो मेन पर्सनालिटी है जिन्होंने इसको हेड किया था वो थे बीबी मंडल, विदेश्वरी प्रसाद मंडल। उसके अलावा जो मंडल पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंसान है वो कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो this is on the US operations. Okay, this is something which is very confusing, क्योंकि ये एक ही चैप्टर में से है और उसके बाद वो सारे इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है मोस्ट ऑफ यू, फॉर मोस्ट ऑफ यू, राइट? कुछ होंगे जिनको अच्छा लग रहा होगा चैप्टर, लाइक चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स, बट इट इज रियली कंफ्यूजिंग। इतने सारे ऑपरेशंस को याद रखना, और इसमें जैसे directly chronology पूछा हुआ, arrange the following US operations in sequential order of their occurrence. Operation Desert Storm, Iraqi Freedom, Infinite Reach, NATO bombing of Yugoslavia, and Operation Enduring Freedom.
You have the options also. So try and give me the answer. And the people who will be watching it like after live, तो वो भी ये कोशिश करें कि इसको पहले पॉज करें, उसके बाद खुद से सोचे आंसर, और उसके बाद इसको लाइक जब मैं आंसर बता दूँ तब बाद में उसको देखें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू शुड ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि एग्जाम में कोई आपको समझाने के लिए नहीं होगा, तो यू शुड हैव दैट हैबिट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो ट्राई एंड सॉल्व इट। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई कॉलेज की सीट नहीं जा रही है गलत आंसर देने से, बाद में जरूर जा सकती है, तो पहले ही गलती करना इज बेटर बाद में गलती करने से। ओके, सो आई थिंक, ओके लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन वाइज, मैं फिर उसके बाद आंसर बाद में बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज योर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन सबसे पहला ऑपरेशन था जो यूएस ने किया था कुवैत के लिए, जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, एंड इट वाज इन 1992 आई गेस। तो सबसे पहला ऑपरेशन लाइक यही था, इराक ने कुवैत पे फॉर इट्स ओन, बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रीजंस अटैक किया था, और उसके बाद एक पूरा यूएन का यू नो पूरे यूएन की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो साथ में आती हैं, एंड देयर इज एग्जैक्ट नंबर लाइक 34 कंट्रीज साथ में आती हैं और एक कोलिशन बनाती हैं, और उसके बाद जाके वो अटैक करती हैं। तो यूएस को ऐसे बोला जाता है कि इट वाज हाईली हाईली डोमिनेटेड बाय द यूएस फोर्सेस ओनली, तो इस वजह से इसको डायरेक्टली यूएस ऑपरेशंस में डाल दिया जाता है। तो ये था 1990 1919 में, ओके सॉरी, my bad, it wasn't in 1992, it was in August 1990 when Iraq invaded Kuwait. So this was the Operation Desert Storm. Then second is the Iraqi freedom. Iraqi freedom is the latest, क्योंकि ये 2003 में हुआ था, और ये ऑपरेशन क्यों बोल रही हूँ कि ये लास्ट होगा, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर तो एनसीईआरटीज क्लियरली से दिस कि ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों तरीके से एक बहुत बड़ा फेलियर था। तो यूएस हेजेमनी का एंड तो मैं नहीं कह सकती कि एंड हो गया है, क्योंकि वो अभी भी है, बट ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस का जो सिलसिला चल रहा था वो कहीं ना कहीं इराक के इन्वेजन के बाद वो चीज खत्म हो जाती है यूएस की तरफ से, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं, जो उनका मोटिव होता है अटैक करने का इराक को, इन्वेड करने का इराक को बेसिकली, जिसको वो आयरॉनिकली नाम देते हैं इराक की फ्रीडम, क्योंकि सदाम हुसैन से उनको फ्री करना था बेसिकली कंट्री को। वो ऑपरेशन फेल हो जाता है, और उसके बाद यूएस ट्राई नहीं करता है इसके बाद, और तुम्हारी बुक में भी नहीं दिया हुआ है इसके बाद कोई ऑपरेशन, सो टू बी लाइक टू एलिमिनेट दीज थिंग्स, तो यू शुड नो कि इट वाज इन 2003, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो हम ये दो ऑप्शन से अगर हमें ये स्टार्टिंग के दो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं ठीक से, तो उसके बाद हमारे दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन सी जा चुका है, ऑप्शन बी भी जा चुका है। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस है, जिसमें दोनों में को फर्स्ट बताया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि वो सबसे पहले होगा 1990 में हुआ था, क्योंकि और इराकी फ्रीडम वाला सबसे लास्ट है जो 2003 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ओके, इनफाइनाइट रीच का जो ऑपरेशन है, और जो नाटो बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया है, दोनों बहुत पास पास वाले ऑपरेशन हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही लीडर के टाइम पे हुए थे। If someone can tell me that leader का name, so it will be really great. Who was that leader who was once like उनकी पॉलिटिक्स को सॉफ्ट पॉलिटिक्स बोला गया था, क्योंकि वो सॉफ्ट इश्यूज पे वर्क ज्यादा कर रहे थे, जैसे कि इन्वायरमेंट वगैरह।
but still during his time we had two operations. So okay, so जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है वो बाद में हुआ था, और जो नाटो की बॉम्बिंग थी यूगोस्लाविया की वो पहले हुई थी। तो यूगोस्लाविया में एक अल्बेनियन पॉपुलेशन का एक लाइक गुड चंक रहता था, और दे हैड लाइक इन द कोसोवो प्रोविंस। तो बेसिकली जो एयर फोर्सेस होती है नाटो कंट्रीज की, जो यूएस जिसको लीड कर रहा होता है, वो यूगोस्लाविया पे बोम्बार्डिंग करते हैं। तो दिस वाज बेसिकली द ऑपरेशन, और ये हुआ था 1999 में। एंड सेम ईयर में, सेम ईयर के अराउंड ही, या तो सेम ईयर के अराउंड ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच भी होता है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच भी होता है, और इनफाइनाइट रीच में क्या होता है कि यूएस की जो दो एम्बेसीज होती हैं, नैरोबी में और दर इस सलाम में, तो दोनों पे अटैक हो जाते हैं। और बेसिकली उनको कहा जाता है कि ये अलकायदा जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू होते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में यूएस एक और ऑपरेशन करते हैं जिसका नाम बोलते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो दिस वाज अ सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल-कायदा टेररिस्ट targets in Sudan and Afghanistan as well. So this was in 1998, this was in 1998 and this was in 1999. तो दोनों में एक साल का गैप है बस, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है दोनों ऑप्शंस में ही। तो we can like eliminate now, क्योंकि we already know कि दोनों का टाइमिंग क्या है। और जो लास्ट वाला है वो है ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। सो मैंने इसको इससे याद किया था कि इंड्योरिंग फ्रीडम का बेसिकली जो मोटिव था वो ये था कि टेररिस्ट से फ्रीडम चाहिए। तो मतलब मैंने ये को जो स्टोरी बना के याद कर लिया था कि मुझे हमें टेररिस्ट से फ्रीडम चाहिए। तो अब डायरेक्ट अटैक यूएस पे टेररिस्ट का कब होता है, क्योंकि अभी हमने जितना भी देखा एक भी अटैक यूएस पे नहीं था। जितने भी ऑपरेशन हुए ये दूसरी कंट्रीज के लिए हुए, या फिर एक अटैक जो थोड़ा सा लाइक इनडायरेक्टली नहीं, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है यूएस से, वो है ये दिस इनफाइनाइट रीच वाला, क्योंकि यूएस एम्बेसीज पे अटैक होते हैं उसके रिस्पॉन्स में था। बट कोई भी अटैक डायरेक्टली यूएस के ऊपर नहीं हुआ है अभी तक। बट ये जो ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम है ये इस वजह से आता है क्योंकि यूएस पे डायरेक्टली अटैक होता है 9/11 अटैक विच इज वेरी इनफेमस, राइट? सो which was on 11th of September 2001। उसके रिस्पॉन्स में इंड्योरिंग फ्रीडम नाम से एक ऑपरेशन चलाता है यूएस, जो कि बेसिकली मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अब क्योंकि उन पे दोबारा एक पर्सनल अटैक हो चुका है तो अब उन्हें सबसे फ्रीडम चाहिए। तो इंड्योरिंग फ्रीडम, तो दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द टेररिस्ट। सो मैंने इस हिसाब से याद किया था ये। तो इट वाज इन 2001। अब इसको हम लोग क्रोनोलॉजी लगाएं तो फिर फर्स्ट वाला ऑपरेशन हो गया 1990, देन इराकी फ्रीडम इज इन 2003। तो इसमें ये दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं, ए एंड बी। एंड इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो पहले थर्ड हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है। थर्ड और फोर्थ में जैसे कि मैंने कहा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो थर्ड और फोर्थ के हिसाब से ये फिफ्थ वन इज 2001। तो 2001 ऑफ कोर्स ये दोनों सेम ही दिए हुए हैं। ओके हाँ, तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच हुआ था और उसके बाद नाटो की बॉम्बिंग हुई है यूगोस्लाविया पे। क्या करेक्ट? या सो इट विल बी द करेक्ट आंसर इज ओके जस्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, after spending a lot of time on that question, the next question is which of the following statements regarding the proclamation of emergency 1975 is incorrect? Always look for this word which is correct and which is incorrect, because it is really important. कभी कभी लोग जल्दी में incorrect को correct और correct incorrect पढ़ लेते हैं या not पढ़ना भूल जाते हैं, which of the following is correct is not correct। तो उस चीज को हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो। डोंट बी इन अ हरी, like read the question twice at least।
So, which of the following statements regarding the proclamation of emergency in 1975 is incorrect? Very interesting chapter. I think Indian politics का सबसे interesting chapter is this, according to me. मुझे लगता था ये. Option A is under emergency, the government suspended the freedom of press. Option B, the 46th Amendment was passed to ensure that the election of Prime Minister could not be challenged in the court. Option C, arrested political leaders could not challenge their arrest through the habeas corpus petitions. Option D, protests and strikes and public agitations were disallowed. I think it is very easy to eliminate if you like use your common sense कि emergency के time पे क्या क्या चीजें suspend हो सकती हैं, क्या क्या चीजें ban हो सकती हैं. I think it is easy to eliminate if you even if you don't know the the actual factual um, date or something. Okay, I'm giving hints. तो भी ये question solve हो सकता है. Try to answer. Okay, so let's discuss this. So option A is under emergency, the government suspended the freedom of press. Very obvious thing. अगर इस बारे में किसको नहीं भी बताओ तो लाइक इमरजेंसी अगर कोई इम्पोज कर रहा है कोई भी लीडर हो तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही सस्पेंड करेगा क्योंकि योर प्रेस इज दैट मीडियम जिससे इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है. तो अगर लोगों में अवेयरनेस हो जाती है इस चीज की या जो भी है लाइक सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल सकते हैं या उसकी वजह से और ज्यादा प्रोटेस्ट हो सकते हैं तो सबसे पहले कोई भी सरकार होगी तो ऑफ कोर्स वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को सबसे पहले सस्पेंड करेगी. और जैसे कि मैंने कहा इससे ही रिलेटेड ऑप्शन डी है कि स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट को डिसअलाउ कर दिया था. अगर वो अलाउड रहे तो ऑफ कोर्स इमरजेंसी को रिटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए. तो ऑप्शन ए और डी आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ ऑप्शन सी, arrested political leaders could not challenge their arrest through the habeas corpus petitions. बिल्कुल सही क्योंकि उस टाइम तक जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हुआ करते थे हमारे देश में जिनको चेंज कर दिया गया था फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट के टाइम पे वो ये थे कि जब इमरजेंसी है देश में तब उस टाइम पे यू योर all of your fundamental rights are suspended, including your right to life and liberty. Right. अब क्योंकि right to life already suspended है तो आई होप दैट यू ऑल रिमेम्बर कि हबीज कॉर्पस का पिटीशन कब फाइल होता है कि जब आपको इलीगली डिटेन कर लिया या फिर आपकी क्योंकि अब राइट टू लाइफ इज कनेक्टेड टू इलीगल डिटेंशन. तो अगर आपको इलीगली डिटेन कर लिया तो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू से कि देखिए मुझे गलत तरीके से डिटेन किया गया है या फिर कह सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए बट स्टिल दे हैव हाउस अरेस्टेड मी मे बी समथिंग लाइक दिस. नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द सेम. तो हबीज कॉर्पस का रिट तब जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल होता है. तो अगर इमरजेंसी तो उस टाइम तक जो इमरजेंसी का प्रोविजन था उसमें ये था कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी इमरजेंसी के टाइम पे होती ही नहीं. तो इस वजह से जितने भी अरेस्टेड पॉलिटिकल लीडर्स थे जितने उन लोगों ने जितना जाके अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को उन सब ने ये कह दिया कि नहीं आप अपने अरेस्ट को चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं कोर्ट में क्योंकि आपके ऊपर हबीज कॉर्पस की पिटीशन अप्लाई ही नहीं हो सकती. हबीज कॉर्पस के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई ही नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी. So option A, C, and D are correct. Now, coming to option B, the 46th Amendment was passed to ensure that the election of the Prime Minister could not be challenged in the court. Okay, so एक बात बताओ ऑलरेडी क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला हुआ है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी 1975 वाला टाइम हमें देखना है. 46th अमेंडमेंट कब आया होगा?
42nd अमेंडमेंट था जो इमरजेंसी के टाइम पे आया था। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट होता है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो 44th अमेंडमेंट है विच इज इन 1976, राइट। और उसके बाद 46th अमेंडमेंट उसके बहुत बाद में आता है। तो इमरजेंसी का टाइम उस टाइम तक खत्म हो चुका है। तो ऑप्शन बी कहीं से कहीं तक भी करेक्ट नहीं हो सकता। एंड टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट what should have been the correct statement is कि जो इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, जिस अमेंडमेंट से ये चीज की गई थी, दैट वाज नॉट 46th अमेंडमेंट, दैट वाज 39th अमेंडमेंट। तो 39th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट था जिससे जो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर था, स्पीकर था, और आई गेस वाइस प्रेसिडेंट का भी, इनके जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते। This was the amendment. It was 39th amendment, not the 46th amendment. So option B is the incorrect answer. Okay. Next, who advocated the Chauburge Rajniti? Again, a very factual question. It is like if you know, you know, otherwise you don't know. So option A is Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Lal Krishna Advani, G.K. Mittal. If I'm not wrong, though, this question is from the additional topics which CBSE provided us. So option B is the correct answer. Ram Manohar Lohia. I think there is no need to discuss this because it's a very factual question. You know, you know. Okay. Question number 30. Concerning the political stalwarts or who lost in their constituencies in the 1967 general elections, match the following columns. Again, a factual question. K. Kamaraj, S. K. Patil, Atulya Ghosh, K. B. Sahai, and the constituencies, the state. Okay, these are not constituencies as such. These are just the states. So the states are Bihar, West Bengal, Maharashtra, and Tamil Nadu. You need to match कि वो कहाँ से हारे थे. If you have some idea related to like कि regionally कौन सी you know कौन से नाम वाले लोग उधर रहते हैं स्टेट में, तो यू कैन टेक अ गेस. Okay, so we should solve this. For all of these questions, you should make a chart or something. I'm saying this. For all the chapters, do it chapter wise or do it like book wise कि पूरी बुक का ही एक जगह लिख दिया और उसके बाद उसको एक वीडियो से तो पहले एटलीस्ट उसको 10 बार पढ़ ही लेना. So I think that will be very helpful. So K. Kamraj is from Tamil Nadu. S. K. Patil. If you focus on Patil, then I think it was easy to guess. Maharashtra. Atulya Ghosh. Oh, sorry. Mm-hmm. K. Kamraj is for Tamil Nadu. S. K. Patil is for Maharashtra. Atulya Ghosh is from West Bengal. And K.B. Sahai is Bihar. So one ka fourth and second is third. So option D is the correct answer. Next question. When was ASEAN established? Tell me quickly the full form of ASEAN.
So it's South Association of the Southeast Asian Nation. It was established in 1967. Which of the following nations is not included in the G7 nations? Canada, Italy, UK, Brazil. One of these countries is in G20 and not in G7. Being a political sciences student and you guys also like studying political science in it's full time, I would highly suggest that you should read newspapers. And if you cannot read newspaper, then you should not be isolated from the world altogether. Okay, you should have some understanding, and you should know what is going on in the world, and at least in your nation. That is more important, I would say. And why I'm saying so on this question is because um, there was this recent meeting of G20 which held in India. So if you had closely, followed it, तो थोड़ा सा शायद से easy हो सकता था इसको guess करना आंसर. I know कि people think 12th के टाइम पे कि पहले इसका स्कूल का ही पूरा हो जाए उसके बाद सोचेंगे कि अलग से क्या करना है बट आई थिंक कि एज अ सिटीजन एंड as a future of our country, I think all of us should be well aware about what is going on in the world. So there is no alternative to newspaper reading. So you should read newspaper. Okay, so the country is Brazil. Canada, Italy, and UK are part of G7. Brazil is the part of G20 nation. And why is it so? Because Brazil is not considered that developed country. G7 nations are consisted of mostly of the developed countries according to the Western notions, of course. So Canada, Italy, and UK are relatively developed, and Brazil is considered as a developing country. So G20 is the group of developing nations. Next question. Choose the correct answer from the option given below. The Kyoto Protocol. Okay, it is about the Kyoto Protocol. It was agreed in 1997 in Kyoto, is a national agreement setting targets for industrialized countries based on the principles set out in UFCCC, does not deal with greenhouse gas emissions. As I say, always look for these words, does not, these sort of. And under this protocol, carbon dioxide, methane, hydrofluorocarbons, etc., are considered at least partly responsible for global warming. At least partly responsible for global warming. It is also an easy question if you can eliminate the options. So elimination करके it will be easy. Okay, so this is correct. A is correct. And अगर ईयर भी नहीं पता था तो सारे ऑप्शंस में ए ऑलरेडी बताया हुआ था कि करेक्ट है तो इतना दिमाग नहीं लगाना था पहले ऑप्शंस देख लेने चाहिए कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि सब में कॉमन है तो मतलब वो तो ऑलरेडी करेक्ट है तो उस पे तो एक फालतू में फिर क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है उसको दोबारा से सोच के कि 1997 ही था कि नहीं था तो छोड़ देना चाहिए ओके सो द नेक्स्ट इज योर इज अ नेशनल एग्रीमेंट setting targets for industrialized countries is a national agreement. Okay, debatable. Based on the principles set out in UFCCC. This is correct. Uh, United Nation United Nation Framework Convention on Climate Change. Yes, this is the full form of UNCCC. So this is correct. So C is correct, A is correct. हमें दो ऑप्शन समझ आ रहे हैं दो जो कि सही हैं तो आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी क्योंकि उसमें ए डी ई तीनों के लिए बोला है तो ये तो जज पे है
Okay. Next is it does not deal with the greenhouse gas emissions. So if it does not deal with greenhouse gas emissions, तो फिर उसका काम क्या था फिर? So it was related to GHG emissions only, इसी वजह से वो प्रोटोकॉल साइन हुआ था. तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. अब डी ऑप्शन एलिमिनेट होते ही we have another option which is gone, that is option A. So option A जा चुका है, option C जा चुका है. We are left with D and D. Now let's look at what is there in option E. Under this protocol, carbon dioxide, methane, hydrofluorocarbons, etc. are considered at least partly responsible for global warming. Now, if I consider this to be correct, because C is correct, we all know. Now we have to choose between B and E. And this is okay. It is saying it is the national agreement. B is saying it is the national agreement. अगर कोई नेशनल एग्रीमेंट होगा और उसके बाद वो टारगेट सेट कर रहा है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए तो लगता है सारी कंट्रीज मान लेंगी मतलब इंडिया एक नेशनल एग्रीमेंट बनाता है नेशनल लेवल पे एग्रीमेंट बनाता है और उसके बाद हम कह देते हैं यूएस को कि आप कोई सर्टेन अमाउंट से इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एमिट कर सकते क्या यूएस हमारी बात मानेगा एक नेशनल एग्रीमेंट को हम कैसे कह सकते हैं कि वो हम किसी इंटरनेशनल कंट्री से फॉलो करवाएंगे So B is incorrect because it is saying that Kyoto Protocol is a national agreement. No, it was an international agreement. So B is gone. So the correct answer is option D. Now, question 70. Who is known as the Frontier Gandhi? Again, a very factual question. If you know the name, then it's fine. Otherwise, the problem with the factual question is that you need a good memory for solving them. The kind of question that I like, the question that I discussed the previous question, it was a more like a conceptual question. You need elimination tricks, you need focus, you need, तुम्हें बहुत ठीक से पढ़ने पड़ेंगे options क्या दिए हुए हैं उसके एक word से पूरा option change हो सकता है. But these sort of questions are really easy. If you can memorize, then it's fine. Otherwise, भूल गए तो फिर तो marks ही नहीं. Okay, so he's known as Frontier Gandhi. It's Khan Abdul Ghaffar Khan, option D. Next question. Question 18. Which constitutional amendment act inserted the word socialist and secular in the preamble of the Constitution of India? 42nd Constitutional Amendment Act, 44th Constitutional Amendment Act, 61st Constitutional Amendment Act, and 73rd Constitutional Amendment Act. Have you guys ever read the preamble which is given in the NCERT's book? एक बहुत सबसे पहले जब शायद चैप्टर्स शुरू होते हैं उससे पहले ही प्रियम्बल दिया होता है एनसीईआरटी के बुक्स में मोस्ट बुक्स आई थिंक ऑल बुक्स सो हैव यू एवर रेड दैट प्रियम्बल वेरी केयरफुली क्योंकि अगर वो भी पढ़ा होगा और अगर आपने अपना चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा तब भी ये क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है क्योंकि उस प्रियम्बल के नीचे ही ये चीज बताई हुई होती है कि कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसकी वजह से जिसने ये दो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर प्रियम्बल में ऐड किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एनी आंसर्स? Okay, so it's option A, 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act is very important, like very, very important. क्यों? क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यू शुड नो लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता ही है जैसे हमने इससे पहले भी देखा जो कि 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में था तो ये जो टाइम पीरियड है 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 46th अमेंडमेंट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब एक के बाद एक आते हैं और इनका एक ना
एक कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से कि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लीगल बैटल विच वाज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री एट द टाइम. सो अगर इसको स्टोरी के साथ पढ़ें आप, तो मुझे लगता है ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट आया, फिर 44th अमेंडमेंट पे उसको चेंज कर दिया, वो चीजें रिवर्स हो गई. तो उस हिसाब से अगर इस चीज को याद किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19, again marching. Chipko movement, Dalit Panthers, Bharatiya Kisan Union, NTR movement. And column 2 is movement against caste discrimination, environmental movement, movement against alcoholism, and farmers movement. So basically ये जानना चाहता है क्वेश्चन कि ये मूवमेंट्स किस किस एम से नो चल रहे थे, या इनका बेसिक मोटिव क्या था. Try and answer. I'll give you 5 seconds and then I'll give the answer. Even if you don't know the answer, just look for that one option जो कि सब में different है और या फिर same है, क्योंकि उससे elimination easy हो जाता है. Actually सारे ही same है. Okay, that's also cool. Um, okay, so let's start solving it. So चिपको मूवमेंट हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होना चाहिए था. If you don't know, then you should reread the NCRTs. So one is related to environmental movement. First is for second. और एक पहला ही ऑप्शन सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाता है, दैट इज बी. फिर भी फॉर एक्सप्लेनेशन, सेकंड इज दलित पेंथर्स. ये मूवमेंट था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. थर्ड इज भारतीय किसान यूनियन. भारतीय किसान यूनियन, किसान लाइक अलग ही पता चल रहा है कि वो किसान के बारे में बात करने वाले हैं, और ऑप्शन आपको दे भी रखा है फार्मर्स मूवमेंट. आई थिंक इट इज वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट इज एनटीआरएफ मूवमेंट. ये चीज मैंने कल भी डिस्कस की थी कि विमेन मूवमेंट था अल्कोहल के अगेंस्ट. ओके, in next and the last question for today, question number 20. The expression Ayaram Gayaram is related to the issue of very interesting subtopic of the chapter, and it is like related, it is uh, still prevalent. Casteism, anti-Congressism, syndicate, and defection. Okay, I said it is still prevalent, so except one, I think all of these things are still prevalent. So in my hint will not be considered a hint anymore. आयाराम गयाराम, नाम से ही पता चल रहा है, आयाराम गयाराम. Okay, so this was very interesting incident, जो कि शायद हरियाणा में होता है, और उसके बाद एक मिनिस्टर होते हैं जो कि पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो ये चीज 4 बार होती है वो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो उसके बाद ये एक्सप्रेशन, मतलब ये स्लैंग बन गया था उस टाइम पे कि आया राम गया राम. तो उनका नाम राम करके कुछ था, अभी मैं भूल रही हूँ एग्जैक्टली क्या नाम था. सो इफ यू गाइज नो तो राइट इट इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स, क्या नाम था एंड वो क्या इंसिडेंट था एग्जैक्टली. So it is related to defection. और इसी टाइम के बाद फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी आता है हमारी कंट्री में, जिसमें फिर कह देते हैं कि आप अपनी पार्टी को ऐसे बार बार चेंज नहीं कर सकते. अगर आप अपनी पार्टी को चेंज करते हैं तो उसके बाद आपकी जो विनिंग सीट है जहाँ से आप जीते हैं वो आप हार जाएंगे. तो आयाराम गयाराम इज रिलेटेड टू डिफेक्शन. Okay, so I think this is all for today. This is enough for today, I would say. We have many more questions. We'll discuss that tomorrow, hopefully. So I'll be live tomorrow as well at the same time, from 7 to 8. And
do come and join and try to solve them also. It is very important that you solve these questions on your own. And at last, do visit ExamFactor's website for these crash courses, mock tests, and other help, whatever kind of. And you will get a contact number on their website itself. So if you have any doubts regarding the courses and for the crash course or for the mock test series or anything else, so you can connect with them. They will be very happy helping you.